हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं वैभव ग्लोबल के ऊपर। दिस इज द सेकंड टाइम आई एम मेकिंग वीडियो ऑन वैभव ग्लोबल एंड द रीजन इज this time I am thinking to sell this stock because my expected return has been provided by this stock. And if you check my YouTube channel, so you will find my video on Vaibhav Global last year. Last year I took a buy position in this company, and at that time I analyzed the company, what this company does, and what my perception over it. I go through all the segments about the company कि क्या क्या कंपनी काम करती है, किस तरीके से काम करती है, क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो वो सब मैंने उस वीडियो में बताया था। एंड now it's about more than 1 year that I have kept this stock with me, and in this bull run the company, the stock has provided me approximately 40 more than 40%, and now I'm thinking to book my profit. So I'm making this video so that I can make my decision on the basis of company current position and the performance, what are the new circumstances the company has gone through. तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। दिस इज द स्क्रीनर डॉट इन। तो इसमें यहाँ दिख जाता है एक क्विक रिवीजन हो जाता है कंपनी का, मार्केट कैप क्या है, पी क्या चल रहा है। तो करंट पी 64.5 विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, so definitely I have to go through. ROE is at 9%, book value is 72.8, and the current price is 447. So yes, by the face of it I can feel the stock price is quite expensive. This is just a first step, or the first 20 second or the 10 seconds I spend on every stock. Then I go and check what screener has to say about particular stock. So this is what company says, the company is maintaining healthy dividend payout. Yes, this is true. फिर इसके बाद फिर मैं ये बेसिक ये देख लेता हूँ, एंड जस्ट आई स्क्रॉल इट डाउन दैट क्या इसमें कुछ मेरे को दिखता है नहीं दिखता है। ठीक है, तो आफ्टर स्पेंडिंग दीज 20 seconds आई हैव मेड माई पर्सनल एनालिसिस टूल, जिससे मेरा बहुत ही क्विक एनालिसिस हो जाता है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे को पता चल जाती है कंपनी की करंट पोजीशन एंड परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दिस इज़ माय पाइथन कोड, और ये क्या करेगा, ये पाइथन कोड क्या करेगा, ये जो ये डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो ये नंबर्स दिख रहे हैं, जो इसके पास डेटा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो नंबर्स हैं, this code will move this data over to Excel. And how it will do it, so this is my code, this is the dynamic code, and यहाँ से मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना टिकर कॉपी करना है, इस कोड में मेरे को अपना टिकर डालना है यहाँ पर, ठीक है, जो कि हमने डाल दिया है। फिर एक मेरे को यहाँ पे नाम लेना है, जो नेम मेरे को अपनी एक्सेल फाइल का नेम रखना है वो मेरे को यहाँ डाल देना है, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी डायनेमिक, दिस विल वर्क ऑन ईच stock. I'll run this code now. The code is successfully run, and as you can see, the Vaibhav Global fundamentals file has been created. जो भी डेटा हमें स्क्रीन पर दिख रहा था वो डेटा सारा का सारा ये इसने मुझे एक एक्सेल फाइल में मूव कर दिया, ठीक है। सो but still if you see कि this Excel file is not that user friendly. I made the Excel macros which will automate this format task, and earlier it was very time consuming part for me, but uh, this macro has, and see यहाँ पे बहुत ही easily आपको सारा डेटा मिल जाएगा, जैसे हमारा क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट, एनुअल इनकम स्टेटमेंट, सेल्स ग्रोथ परसेंटेज, प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज, रिटर्न ऑन इक्विटी, स्टॉक प्राइस CAGR, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, इक्विटी कंपोजिशन, एनुअल इक्विटी कंपोजिशन, ठीक है। कुछ ऐसे एनालिसिस फॉर्मेट्स हैं जिनको मैं हर शीट में यूज़ करता हूँ, जो बेसिक
मेरे फॉर्मूलेज रन करते हैं, तो उसका भी मैंने एक मैक्रो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, उस मैक्रो का नाम मैंने रखा हुआ नॉर्मलाइज। ठीक है, आप देखेंगे इस मैक्रो ने कुछ मेरे बेसिक चार्ट ऐड कर दिए हैं, कुछ एड ऑन टेबल्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है इस मैक्रो और कोड के ऊपर, जो कि आप मेरे वीडियोस में से जाके सर्च आउट कर सकते हैं। उसका नाम है 2 minutes fundamental analysis। सो दिस विल गिव मी अ क्विक पिक्चर, एंड उससे भी ज़्यादा क्विक पिक्चर देता है ये आपका चार्ट। दिस चार्ट इज कैन कंपेयर आवर सेल्स ट्रेंड, एक्सपेंस ट्रेंड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, interest and net profit. So by this you can see that our net profit is very volatile, still बहुत exponentially नहीं बढ़ी है, but the red flag which I can see over here is that the expense line is over and above of sales। इसका मतलब कि जो sales से ज़्यादा expense ज़्यादा बढ़े हैं, it means our margins are going down, that is why our operating profit is going down, so is our net profit, and this is what our interest is showing। Interest means the जो भी कंपनी ने डेट लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट मतलब जो कर के ऊपर जो ब्याज लगता है। दिस चार्ट शोज हाउ द इंटरेस्ट इज ट्रेंडिंग फ्रॉम जून 2020 टू जून 2023। ओके, एंड annual report, okay, this is the annual chart on the basis of same concept कि यहाँ पे मैंने सबको बेस ईयर को 100 ले लिया है, and this is the trend analysis over the period of 10 years। so as you can see, operating profit are rising till 2021, but after 2021 there is a rapid decrease in the operating profit। it is due to, as we can see in the last chart, key that our expenses are over and above of sales, that is why our margins are rapidly decreasing। the net profit is also decreasing after 2021। so एंड यहाँ पे बैलेंस शीट का एक हमारा चार्ट बन गया है। दिस ऑल्सो comes from that macro which we had run। तो दिस शो कि हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स कंपेरेटिवली या तो सेम लेवल पे हैं, बट रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग, दिस इज अ वेरी गुड पार्ट। दिस शोज दी सॉल्वेंसी प्रोस्पेक्ट फॉर द कंपनी, कि कंपनी की सॉल्वेंसी में कोई इशू नहीं है। तो दिस इज अ वेरी गुड पार्ट इफ समवन इज इन्वेस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। I cannot touch each and every aspect in this video because I have to keep it short, otherwise it will get boring। so ठीक है, इसके बाद मैं और जो एनालिसिस मैं करता ही करता हूँ, तो आई विल यूज दैट मैक्रो एज वेल। उसका मैंने नाम दिया रेशियोज एंड चार्ट्स, एंड द होल वर्किंग इज डन विद इन 10 seconds। so these are the two new sheets which are added in our workbook, financial ratios and charts। so this will give you the overall look। let me just brief about the name। This one is the total asset turnover ratio, this is fixed asset turnover ratio, this is debt to asset, this is debt to capital, debt to equity, financial leverage, interest coverage, operating margin, net profit margin, return on asset, return on equity। so I have made some charts on the basis of above ratios। so this is our profitability ratio। if you see the crazy change in the number of ROE, this could be the reason the company has taken a leverage on the basis of debt, the ROE has increased। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जैसे ROE का हमारा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी। तो the return get leveraged due to the debt, but the equity remains the same, that's why the ROE get hyped। so in that case the analysts use return on capital employed ratio,
so that they get the correct picture. This time, to get the clear visibility, let me just delete this line so that I can get the picture of operating margin, net profit, and ROA. This is our asset turnover ratios. So let me just brief you about this ratio, asset turnover ratio. This shows the efficiency of a company, like to generate revenue by using its assets. So if that is growing, that is a good part. Here we can see the long-term prospect for the company. If the company debt has been decreasing throughout the period, then that's a good part, and we can say the company is decreasing their debt. And here we can see, आपको ये यहाँ पे देखा था ना हमने कि एक स्क्यूड था आरओई में, वो यही रीज़न था एट दैट टाइम इन द ईयर 13, in the year 2013 the company was leveraged, and then the company had decided, the management has decided to reduce its debt, and now it shows the long term prospect for the company. And this is the interest coverage ratio, this shows the liquidity मतलब वो अपना ब्याज को टाइम से दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा. So the formula for this interest coverage ratio is interest upon operating profit. So this shows कि कितने multiple times हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारे ब्याज के, ठीक है, मतलब हमारे इंटरेस्ट अमाउंट के. इफ वी रिलेट these two charts and try to interpret it, it shows that the debt is not increased, but the return has comparatively gone down. कि रिटर्न हमारी ज़्यादा डिक्रीज हुई है, डेट हमारा उतना इंक्रीज नहीं हुआ है. एंड दिस इज द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. वर्किंग कैपिटल हमारी होती है जो हमारी डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको मैनेज कैसे किया जाता है. सो ये हमारे दिखाते हैं डेटा डेज कि कितने दिन में हम अपने जो हमारे लेनदार हैं, जिनसे हमें अपना पैसा लेना है, जिन्होंने हमसे सामान खरीदा उधार पे, हम उनसे अपना पैसा कितने दिन में रिकवर कर लेते हैं. If this is constant throughout the period, then this is a good part, that company there is no as such issue that there could be bad debts, and the data days are below because, as I have mentioned, this company sell their products directly to the customer over the website. तो यहाँ पर वो issue नहीं है कि bad debts का issue है या फिर inventory days is very large, and this shows कि यहाँ पर कितने दिन तक इन्वेंट्री रुकती है कंपनी में. तो ये इतना ऊपर होना इज नॉट गुड, कि इसका मतलब सामान बन के रह जाता है पर बिकता नहीं है, मतलब उतना टाइम लगता है. एंड दिस इज गोइंग अप, एंड दिस कुड बी द रीज़न कि वही कोविड आया था, एंड उसके बाद फैशनेबल आइटम्स को इतना नहीं परचेज किया गया है, या उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन है, अभी सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट्स भी हैं. ओके, आई फील कि जितना इस वीडियो में हो सकता था, आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स. यस, बट देयर इज यहाँ पे हमने ये भी चार्ट्स कवर कर लिए थे. तो इफ आई कंक्लूड, margins are going down, which is not a good part for, as this is a small cap company. So I will definitely do some profit booking, but I'm not sure ki if I sell 100% of my stocks. This is my analysis. Rest I suggest that you take your decision basis on your analysis. And with this, I am wrapping up this video. I will definitely come up with some other concepts or with some other company. Till then, take care and goodbye.